राइट. सो फ्रेंड्स, वैसे तो आज एक फेस्टिवल का दिन है, गणेश चतुर्थी का दिन है. So even we would be winding the session a little bit earlier than before, so we'll be moving towards the last question answers for this particular session today. तो एक क्वेश्चन मैंने ऊपर देखा था. सबसे पहले तो देर इज somebody called रुश और रश, if I'm pronouncing it right, who wants to meet the booklet team in person. तो इनको, और आई थिंक मेनी पीपल वुड वांट टू मीट. सो एक रिक्वेस्ट है अमृत को, अगर आप कभी कोई इवेंट कर रहे हो वेर यू आर इनवाइटिंग ऑल द पीपल, देन डू लेट अस नो. तो these Sure. friends and followers of booklet would love to visit. That's so sweet of you. So I keep putting all my visits on social media. Please follow me on various social media like Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, and you'll get all the updates. Like right now, I'm in Jalgaon, and I'm in the museum. It's one of its kinds, the largest museum on Gandhiji. There are 5 lakh books, videotapes, videos of Gandhiji, and I'm gone mad. 5 lakh books on Gandhi, many of them written by Gandhiji, and uh, so and I'm going to use charkha tomorrow. और गांधी जी के ने जो करते थे काम वो सब कम काम में करने वाला हूँ कल. चरखा, स्पिनिंग द चरखा एंड खेती एंड ऑल. देखते हैं, अगर धोती मिली तो धोती भी पहन लूंगा उनकी. So yeah, I will keep you updated. And the new thing we have started is very interesting. जैसे SIP होता है, systematic investment plan. You are experts in this. तो SIP जो अपने पर्सनल वेल्थ accumulation के लिए होता है, how about making an SIP for nation building? तो and his idea is working wonders. कि any damn small amount which suits your pocket, right from 100 rupees to 1000 rupees per month, you can make an SIP in Mission Make India Re. It could be as small as 100 rupees per month or any amount that suits your pocket. और उसकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज email me at bookletguy@gmail.com, and I'll give you the details of how you can participate in this SIP idea for nation building, because that will be very great for us to cover the costs of the mission, because it's a social enterprise, and not at all a commercial one where we want to maximize our profits. No, but there are costs to be covered, and hence this idea that we came up, and people are loving it. So an appeal to you guys that if you could take interest in this idea, I would love to explain this in detail if you get in touch with me. Great. So with that, we'll move towards the final question for today, and that is from Ms. Priyanka Yadav. That what strategies or techniques do you recommend for effective reading and memory retention? ये question काफी बार repeated आया है हमारे sessions में अलग अलग time पे, but it's always a wonderful question because there are new people and it's always them who ask this question. See, I've written a whole book of effective reading. So the 7 Habits of Highly Effective Readers is my book, not written by Stephen Covey, written by me. And I've written down all the experiments that I did with my reading life to become a better reader, an effective reader. Of course, the successful ones I've made part of my book, and the experiments which did not work, which failed, I did not write. So, uh, and about the retention, I think the best way to remember is to discuss. See, what is knowledge? Is it consumption or reproduction? What do you think? Ashish, is knowledge a consumption activity or a reproduction activity? I think knowledge, the word, would be something that is a reproduction. Yes, you're so right. See, consumption is just one part. If you're not able to reproduce it, then it is you have not internalized the knowledge. You have got exposed to the information which will go out of your mind very soon. The best way to internalize a new piece of information, a new piece of knowledge from a book, from a video, or whatever, is to reproduce it, to reparaphrase it in your own desi broken vocabulary. Why I'm saying this? Because we always कि हम क्या करते हैं, we focus on the language of the author. वो ऑथर ने जैसे वर्ड्स यूज किए ना वैसे हम याद करने की कोशिश करते हैं. नेवर डू दैट. Always explain the idea that you have learned in your own words. हम खुद की, even if we all speak in English,
we have our own style of speaking in English or any other language. For example, अभी ये जो desk है, Ashish might say this desk is crowded. I might say this desk is cluttered. Both the lines have the same meaning, but different way of explaining. राइट? वही अगर वो मेरा कॉपी करने जाएगा तो शायद वो भूल जाएगा, बिकॉज ही इज फोकसिंग मोर ऑन द वर्ड्स एंड नॉट ऑन द मीनिंग ऑफ द आइडिया। तो हमको बड़े बड़े जो आइडियाज हम सीखते हैं, जैसे आज हमने न्यूरो डाइवर्सिटी का सीखा, आई डिड नॉट यूज अ सिंगल वर्ड दैट वाज यूज्ड बाय द ऑथर। मैंने मेरा देसी वोकैबुलरी यूज किया है। मैंने तो बहुत बड़े 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 फंडे और क्या यूज किया है। एक बार मेरे को समझ में आ गया, एंड इनफैक्ट दैट्स व्हाई यू लाइक माय टॉक्स, because I don't try to be somebody else. I'm trying to be an authentic अमृत देशमुख। जो बचपन से जो वर्ड्स मैंने सीखे हैं वो वर्ड यूज करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं मेरी जो भी हिंदी है, आई डोंट ट्राई टू स्पीक लाइक हरिवंश राय बच्चन या अटल बिहारी वाजपेयी। विल गेट बोर्ड। जितनी भी मुझे हिंदी आती है उसमें बोलो, पीपल लाइक इट, बिकॉज पीपल लाइक ऑथेंटिसिटी। जो भी आपकी एक्सेंट है वगैरह मुझे पता है, मेरे में एक एक्सेंट है, बट नो बडी कंप्लेन्स अबाउट माई एक्सेंट। जो भी मराठी कोई बोलता है कि मेरे साउथ इंडियन टोन आता है मेरे हिंदी में, फाइन, एज लॉन्ग एज द मैसेज इज क्लियर। रिप्रोडक्शन, एंड दैट्स व्हाई करना क्या है, कोई भी बुक अगर पढ़ रहे हो, आपको कोई वाव आइडिया लगाना, तो क्लोज द बुक। द मोर नंबर ऑफ टाइम्स यू क्लोज द बुक व्हाइल रीडिंग, it sounds ironical, the more knowledge you will gain. जब बुक को क्लोज करके इफ यू रिप्रोड्यूस इट, किसी से बात करोगे, मेक अ वीडियो, पुट इट ऑन इंस्टाग्राम, क्या सिर्फ बुकलेट गाय को करना रूल नहीं है। मेक सोशल मीडिया एज पार्ट ऑफ योर रीडिंग लाइफ। मेक सोशल मीडिया एज योर स्टडीज इफ यू आर अ स्टूडेंट। आई एनवी ऑल द स्टूडेंट्स। अभी तो मेरा तो खैर सब डिग्री वगैरह हो गया। आज के जमाने में अगर मैं स्कूल कॉलेज में होता ना, आई वुड हैव यूज्ड इंस्टाग्राम एज पार्ट ऑफ माई होमवर्क एंड स्टडीज। मैं वीडियोस बनाता मेरे साइन कॉस थीटा प्रिंसिपल्स के, और उस चक्कर में और सीखता मैं, और लोगों को सिखाने के चक्कर में, वो कमेंट्स आने के चक्कर में, उसको रिप्लाई देने के चक्कर में मैं और उसको रिवाइज करूंगा। कितनी अच्छी बढ़िया चीज है। सोशल मीडिया इटसेल्फ इज नॉट बैड, हाउ वी यूज इट इज अप टू अस। ऑलराइट, सो रिप्रोडक्शन इज एवरीथिंग। तो क्या करना है, उसको हमें क्लोज करके जस्ट एक्सप्लेन इट टू समबडी। Write down, yeah, write down is also good, but that is time consuming. It takes a lot of time. So talking about it, writing it down, or making a video is the best way to do to know to remember things, and that becomes part of your character. And then वो बोल बोल के जहन में इतना बैठ जाता है आइडिया, आई फॉरगेट कि वो मैंने कहाँ पढ़ा था और वो किसके ऑथर का था। And that's the whole objective. Now that idea has become my idea, has become an integral part of my personality. I have forgotten कि वो किसी और का था। I think ये सबसे बड़ी जीत है ना किताब की। This is not plagiarism. This is the whole objective of reading a book. You get it? Yeah. So वो अंडरलाइन वगैरह करके कुछ होता नहीं है। कि वो ज्यादा बहुत मैंने देखा अक्सर लड़कियां ऐसा करते हैं। वो ना रेड पेंसिल, रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, पट्टी, पेंसिल, हाइलाइटर, वो हाइलाइटर भी ऑरेंज हाइलाइटर, ग्रीन हाइलाइटर, ये सब औजार लेके बैठेंगे, एंड दे हाईलाइट सो मच ऑन ईच पेज ऑफ द बुक दैट द नॉन हाइलाइटेड पार्ट लुक्स लाइक हाइलाइटेड। तो हाईलाइट कर से सिर्फ यू आर जस्ट डेकोरेटिंग द बुक एंड नॉट नो गेनिंग नॉलेज।